Boman, if you could first tell us the relevance to playing this anthem, and then you'd like to be here? Hi everyone, good morning. Yes. So, the relevance, why we made them stand up. Well, the relevance is that it is our national anthem, and it's a great thing to stand up and sing. It brings a lump in my throat every time. And then, honestly, we just stand. I think everybody should always sing out the national anthem nice and loud, yes. You know, but that's great. But the relevance of this particular thing is that even before independence and before this national anthem became our national anthem, this was used in a film in 1945, a Bimal film called Hamrahi. Yes. And it was a song in the film, could you believe it? And then it went on to become the national anthem. I think it's a great little piece of trivia and a great story. I think we should all be very proud. And we're indebted to the man even more today, in more ways than one. And we'll talk about that later. Yes. So the association with Zee Cinema on why you agreed to come on board as a presenter for this. Okay. First of all, thank you very much for being here. I don't know, there was a slight delay. Yes. I don't like delays. I was waiting for a few people. Is that right? Yes, is it fair to say? We have two sectors, Indore and Bhopal, which have yet to come in. So just so that to make sure, please everybody, don't look at me. I was waiting outside. There's one of you guys who were late, not me. Okay. I came here on the dot. Some of you may have seen me here. Right. So first of all, good morning. And even so, we apologize for starting, whatever reason, a little late. Not a great thing. Cameraman, hello, how are you guys? Yeah. I was told that Zee Classic was wanting to do a Bimal Roy Film Festival. Now, as far as I'm concerned, ever since I was a child, I have been nurtured, और मेरी खुराक जो कहते हैं, वो फिल्म्स ही थी. जैसे कि स्कूल से आता था तो मैं फिल्म्स ही देखता था. And my mother used to encourage me to watch films. ये ताज्जुब की बात है कि मदर्स बोलती है कि होमवर्क नहीं करता है, निकम्मा है, he is not doing well in class, but she used to encourage me to go and watch movies. मेरे घर के सामने एक थिएटर है आज भी, वही थिएटर है लेकिन बंद हो चुकी है, called the Alexander Cinema on Belesses Road near Bombay Central, Grant Road side. So there are two things that I am very grateful. Three actually, for keeping me interested and nurturing my interest in cinema and acting and direction. One is my mother, two is the Alexander Cinema, and three was Doordarshan. Every Sunday, we used to wait at around 11 o'clock. बाहर खेलते होते तो they used to announce the week's program. तो हम लोग घर में भागते थे. I don't know what the name of the program is जो लोग weekly साप्ताहिकी. Yeah, absolutely. तो हम लोग दो चार चीज we wanted to find out, which was the Sunday movie, and the Saturday movie also was very important, and there was a regional movie on Saturday, and Sunday evening there used to be 6 या 7 बजे हिंदी feature film रहती थी. We used to find out that some songs of छाया गीत and some cricket program पे क्या दिखाने वाले, because this to be just a weekly program on sports roundup. कि क्या मतलब, can you imagine the pace of Doordarshan those days? So I had the opportunity as a little boy, and I used to go to my neighbor's house to watch. बाजू के घर में, हमारे पास टीवी भी नहीं थे, हम लोग नेबर के घर में 15-20 बच्चे बैठते थे वहाँ पे, और साथ में गधे तकिया वकिया लगा के, और वो पॉपुलर प्रोग्राम्स देखते थे, और मैं और मेरे नेबर की दादा दादी के साथ बैठ के ये पिक्चर देखता था. तो उसमें ये पिक्चर थी 2 बीघा जमीन. आई गॉट टेकन अप. मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि हाउ द मूवीज दैट वी वर वॉचिंग इन दोज डेज, दिस वाज प्रीटी डिफरेंट. द मूवीज दैट वी आर वॉचिंग दीज डेज, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट. एंड आई सॉ दिस ग्रेट पर्सन हु, फॉर मी, if there's a reason why I'm an actor and want to be an actor in Indian cinema, was this person, Balraj Sahni. मैंने देखी वो film, you won't believe, I was completely shocked at the way he pulled that rickshaw all over Kolkata. और मैं credit titles देखने लग गया. As a child, मैं हमेशा हर picture की credit titles बहुत study करता था. आज भी स्टडी करता हूँ. मैं कभी भी थिएटर को छोड़ूंगा नहीं. हमारी पिक्चर खत्म हो जाती है तो मैं खड़े रह के क्रेडिट टाइल्स देखता हूँ कि कौन किसने क्या किया. एंड बलराज जी, जस्ट मैं रोने लगा. आई सेड दिस इज समथिंग, इफ यू वांट टू बी समवन, दिस इज द वे यू शुड बी. एंड बिमल रॉय वाज द डायरेक्टर,
great literature story. And Hrishikesh Mukherjee was the assistant editor उस फिल्म में. And I read that name, said Hrishikesh Mukherjee इतने great director, assistant editor थे. Wow. और ये इतने great बन सकते हैं. And that movie actually changed my whole approach to a lot of things. साथ साथ में उस वक्त मैंने ये प्यासा भी देखते रहता था, लेकिन that's for another festival. If you need me for another festival, if they sign me up, wonderful. तो हम लोग वो festival, मेरी hint है आपको, गुरुदत्त की भी festival हमें करनी चाहिए, गुरुदत्त जी, है ना? And but I would really recommend that there should be a young iconic actor, younger than me, young actor to present. So we get up. You know, I think that youngsters we have forgotten our treasures. So I'm grateful to Doordarshan कि हम हर हफ्ते एक पिक्चर देखते थे और पुराने गाने भी सुनते थे. आज भी हम जब अंताक्षरी खेलते हैं, हमारे बच्चे वो पिक्चर नहीं भी देखे होंगे, they still sing old songs. Latest गाने अंताक्षरी में कोई गाता ही नहीं. Or these are the songs that even these kids have never seen those movies, but somehow they know the movies, they know the songs. ऐसा क्यों? Because they were great. Similarly, these movies are great. They're world-class films. And I feel that there are 180 channels that are available to us. If you flick 180 channels, आपका पौना घंटा निकल जाएगा. If you put for 1 second also. जो channel surfing जो कहते हैं, उसमें से एक भी channel नहीं है जो हमें हमारे treasures दिखाते हैं. And immediately when they approached me for this, I said, I'm on. It is very important to take the treasure, the national treasures we have, to the next generation. Keep passing it to the next generation. Because when you see movies like this, you will be inspired to make better movies. Simple hai. Maybe logic simple hai na? Am I making sense at all? Nobody is answering only. This lady is playing with her hair. Yaar. So, I am very, very proud to be associated with her. I am very grateful to Zee Classic to bring this one channel in 180 channels to something that was shown in the 60s and 70s on Doordarshan in 4 hours of programming. हफ्ते में एक पिक्चर तो आती थी. 4 घंटे के प्रोग्रामिंग में 6 या 7 बजे शुरू होती थी हमारी दूरदर्शन. वो एम्ब्लेम आता था, उसके एम्ब्लेम के टाइम पे ही जाके बैठ जाते थे. वो चलते रहता था, हम लोग बैठते थे, शुरू होते. 4 घंटे की प्रोग्रामिंग में मैंने कितनी ऐसी फिल्म देखी है which have influenced me and probably made me the actor that I am today. So thank you very much. Awesome. I think we should give Zee a round of applause for this. यार चलो ना यार. I think we open the field for questions. If you would just raise your hand, we'll pass the mic on to you. Mic, please. ये जो कार्यक्रम शुरू किया जाए बिमल राय करके, इसका मकसद क्या है और क्यों किया जा रहा है? सबसे पहला सवाल. Okay, मकसद I think I explained the मकसद. I'll repeat it. मकसद सिंपल है कि हमारे पास अगर इतने ट्रेजर्स हैं, इतने क्लासिक्स हैं, क्या वो हम कैन में ही रहने दें और हमारी जो आज की the generation that is watching films today, why should we deprive them of those classics? हमारे जो भी ट्रेजर्स हैं हम म्यूजियम में रखते हैं, but these things can be shown on television, no? And they should be shown on television because these are the films that actually defined Indian cinema. So maqsad, I think it's very clear to everyone that we have these treasures. It's ours. It's India's. These are the greatest filmmakers of India. Why should they be forgotten? Why? It's a very simple answer. I think that what you have, what is great, if you're going to put it away and keep pretending as if it never existed. This exists. It is yours. It is yours. It is the children's. It is of the next generation. We owe it to the next generation to show it to them. Doordarshan, as I said, was showing it to us. And we're talking about 70s. These movies are from the 40s. So 30 years later, they were still showing it to us. Now 30 years later, after that, don't you think it is right that when Zee Classic comes up with such a fantastic idea, that we should do it? ग्लैमर फिल्में ज़्यादा चल रही है. जी सर, सॉरी. ग्लैमर फिल्में ज़्यादा चल रही है. जी. इसी वजह से इस तरह के फिल्मों से लोग छूट चुके हैं, बहुत पीछे चले गए हैं. Right. तो क्या आपको लगता है कि अभी ये कार्यक्रम स्टार्ट करने से फिर से दर्शक जुड़ना चाहेंगे? नहीं, I don't think we are here to change people. उस जमाने में भी 60s and 60s में भी ग्लैमर फिल्म्स बनाया करते थे. ये तो these are very selected pictures of the 50s and 60s. 50s and 60s में भी बहुत बी ग्रेट फिल्म भी बनती थी, ऐसी बात नहीं है. But this is the selected version of those of great people. हर पिक्चर तो नहीं दिखा रहे हम. We are showing the great stuff and we are not here to change people. We are not saying कि अभी आप influence हो जाओ. We are just here to in a form let you know
कि ये हमारी फिल्म की ट्रेजर्स हैं. अगर आपको देखनी है ग्रेट, अगर आपको इन्फ्लुएंस होना है ग्रेट. हम नहीं कह रहे ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, बट दीज वर, जैसे यूवी में एवी में बताया गया दैट दीज वर प्रोग्रेसिव फिल्म्स ऑफ दोस डेज. जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, मॉडर्न फॉर दोस टाइम्स. मैं तो कहता हूँ कि आज की तारीख में भी ये मॉडर्न सब्जेक्ट्स है. क्योंकि सरोकार का सिनेमा जिस तरह की होते हैं, जो भी सिनेमा है चल रही है सामाजिक सरोकार पे केंद्रित रहती है. जितने भी पुराने दौर के सिनेमा हैं जी, वो आज भी हमारे रायपुर में एक ऐसे संस्थान है जो सरोकार का थोड़ा सिनेमा माइक थोड़ा जो सरोकार का सिनेमा चालू किया हुआ है जी. और महीने में एक बार ऐसी मूवी दिखाया जाता है जो सामाजिक की सारे दृश्यों को केंद्रित करता है. सोशल सब्जेक्ट्स जी. तो वो उससे एक पर्टिकुलर दर्शक बनते जा रहे हैं. मतलब उनका एक मोटो है कि दर्शकों को बांधना पुराने दौर की फिल्मों को लाकर जो सामाजिक समस्याएं हैं. तो इस तरह के क्या आपको लगता है कि चैनलों में भी इस तरह के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए? अगर वो हुआ तो बहुत कमाल हो जाएगा. लेकिन हम तो ये, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि ये फॉरगॉटन क्लासिक्स है और हमारा एक ड्यूटी बनता है कि शो इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. सिंपल. फिर आगे जो होता है वो अलग बात है, बट वाई कीप इट इन द कबर्ड. कोई अच्छी चीज हमारे आपके कबर्ड में, एक अच्छा खासा सूट हो तो आप निकाल के पहनेंगे क्यों नहीं? इट्स सिंपल एज दैट. फिर बोलेंगे ये नया स्टाइल बनाओ, ऐसे ही सूट पहनते जाओ. इट्स देयर. एटलीस्ट दिखाओ सबको कि ये जमाने में ऐसे सूट बना करते थे. यू नो, आई थिंक इट्स, वी आर नॉट हियर टू चेंज एनीथिंग. वी आर जस्ट पुलिंग आउट फ्रॉम व्हाट इज फॉरगॉटन एंड प्रेजेंटिंग इट टू द न्यू जनरेशन, and to me, and to my generation, and to my mother who will enjoy watching it. Why not? है ना? Which are the films of Bimal Roy that really made impact on your life? How the films were so influential and how they are relevant even in today's era? Absolutely. As I mentioned, all of Bimal Roy films are great. You know, you can't be, selective. But the one that impacted me, as I said in the earlier thing, was Do Bhiga Zameen. And more, it was a tragedy of sorts. He goes back, he works to get his land back. And let me give you a piece of trivia, that the ending of the film was very different from the one which has been released. The film was that his wife, Paro again, Nirupa Roy, he gets his land back. He goes, he works as a rickshaw, makes the money, he gets his land back, Paro dies. Earlier, Nirupa Roy dies, he loses his wife. And the audiences cried and cried and cried earlier में, और बहुत ही tragic हो गया. So they decided to change the ending. Paro lives, Nirupa Roy lives, so he gets his love. But when he goes to get back his land, the land has a factory on it. So even if he wanted, he could not get his land back, which is also a tragedy. But it was a wonderful statement about the industrialization of India of those times. This is what is going to happen, and how does one cope with it? But two, Bimal Roy decided to keep Nirupa alive so that at least he's got love in his life. And then there is hope. Without hope, there is nothing. So this actually must have moved me in a big way. And also, as I said, it moved me and influenced me as an actor. And I called, doing the research of this, I called up Mr. Parikshit Sahani. And I said, I'm watching Do Bhiga Zameen and we are presenting it. And he was so happy and such a wonderful person. He always calls everybody brother. Brother, very happy, brother, very good. And I said, give me some experiences as you may have had as a child with your father. And he was so candid and so honest. When Balraj ji went to meet, this is a story of hope, let me tell you. This is a story of hope. When Balraj ji went to meet Bimalda, I think Rishikesh Mukherjee Sahab said that he's done one film, have a look at this actor. Balraj ji was English speaking, came from England, had done law, suited, booted, he put powder on his face. It's in his biography too. He put powder on his face and went to meet Bimalda. Bimalda, without even making him say one word, he said, bye-bye, thank you, nahi chahiye. So he's pretty decent actor. He says, nahi, this is a rickshaw wala. This is a farmer. He has to run on the streets of Kolkata with a rickshaw in his hand. There will be no special effects. I want somebody who looks rugged and Indian. And Balraj ji got very upset कि यार ये right है, मैं सूट बूट पहन के गया, मैं इंग्लिश में बात करने लगा, मैं इंग्लैंड रिटर्न था, highly educated. He went back, changed his clothes, went back and did an audition.
And according to Parikshit ji, that the audition was very bad. Because he felt that dad did not know how to act. Socho, Balraj ji, by his own admission, said he did not know how to act. So he went back again and he read all great books on acting. He read Konstantin Stanislavski's Actor Prepares. He read and read and read and read and he put it into practice. And he says for months he would get into the character, wear those clothes, walk in a particular way. And in my opinion, he is one of India's first great method actors. And he's saying, कोई नहीं रहता था उनके साथ, तो वो कोलकाता अपनी मम्मी बहन को लेके रिक्शा में बिठाते थे. And he used to run around Kolkata for hours till the webbing of his feet used to crack. So even if people turn around and tell you you are not a good actor, you can work and become a good actor. And he says, I used to freeze before facing the camera. Balraj ji has said this. मैंने बोल रहा हूँ. And then you see what he's gone and done. So this is the great, great relevance. And I spoke to you about Do Bigha Zameen and the industrialization and the plight of the farmer. I think these movies are way ahead of their time. And it is very important, sir, that we see these movies today for these things. Some young actor will see Balraj ji and feel so very enthused like I was. And let me tell you, sometimes I'm ashamed when I say, in many places, they ask me, who's your favorite actor? And I say, Balraj Sahni. And the people look at each other. Who? Sorry? It hurts me. It pains me. This is our national treasure, and the young generation doesn't know. No, young generation. Sometimes even the 40-year-old, the 50-year-old doesn't know who Balraj Sahni is. I think shame on us. Shame on us. Okay, you said that बिमल रॉय ये काफ़ी लेजेंडरी डायरेक्टर है जी. और आप खुद इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए जी. पर आज के ज़माने के ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं या बहुत इंस्पायर्ड है आज के ज़माने के बिमल रॉय आपके हिसाब से कौन? That's an unfair thing to say, Jayanti. आज के ज़माने के Bimal Roy is not a good thing to say because a director is a person who does not take a script and put it on the screen. A director is a person who takes a script, makes it his own and says what he wants through the story. Story एक जगह पे होती है, story के नीचे जो director कहना चाहता है वो सबसे important होता है. So each director has his own way, his own visual style, his own acting style, his own edit style. So that's a little unfair. But yes, I will say there are 2 or 3 directors today that I am extremely impressed with because they make socially relevant films and make them entertaining. Bimal also, he made socially relevant films, controversial films, and people accepted it and made them relevant and made them entertaining. ऐसे नहीं कि एक एसोटेरिक फिल्म बनाई जो फेस्टिवल्स में जाए और किसी को समझ में नहीं आई. पब्लिक रिलेट करती थी इन फिल्मों के साथ. Similarly, I feel Rajkumar Hirani does that for us today. He does that today. He makes relevant subjects like education. He makes relevant subjects like just humanity and kindness in the medical profession. I mean, it's absolutely stunning and make them so highly entertaining. So, if at all, and then of course, my new favorite director, Shujit Sarkar, I'm so happy at the way, the kind of cinema he's approaching and making it successful. That's great. I mean, Piku was my favorite film of last year. I don't know if you agree with me. I just love that film because, yes, again, there is a Piku, there's a story. ये इनकी जर्नी है और स्टोरी के नीचे दो या 3 चीजें और जो कही जाती है वो अनसेड है. वो घर जाते हैं फिर हमको लगता है क्योंकि we get hooked to the story and we keep saying he's talking about life. He's talking about caring. He's talking about different people. He's talking about another kind of love. He's talking about death in another way. Relating it to your stomach problems, यार. क्या connections है उसके साथ? I feel it is a great voice. Bimal Da was a great voice in his time. Guru Dutt was a great voice of his time. And I feel these gentlemen have something, absolutely something. ये जो जरिया है जो ये क्लासिक दिखाने का बाय टीवी माध्यम से जी. इसके अलावा भी ये क्लासिक को जीवन रखने के लिए और कोई जरिया है कि और भी कोई आपके हिसाब से लग रहा है ये तो अच्छा ही जरिया है राइट बट आपके हिसाब से और कोई जरिया है कि जो क्लासिक को और भी हम लोग किसी और भी जरिए से दिखा सके? अनफॉर्चुनेटली आज तो फिल्म्स तो उन लोग फोन पे भी बेच रहे. हाउ कैन यू वॉच अ क्लासिक फिल्म ऑन अ फोन? आई एम सॉरी बट इफ दिस इज अ ट्रेंड, आई एम नॉट सेइंग वी गॉट टू मेक इट अ ट्रेंड. ट्रेंड इज अ बैड वर्ड. ये दिखा है
तो लोग ये 5 फिल्म के अलावा उनके सब सारे फिल्म देखेंगे. दे गेट एक्साइटेड टू सी द नेक्स्ट ऑफ द सीरीज. आप फॉरेन में जाएंगे, लोग बिमल रॉय की फिल्म देखते हैं आज भी. I know of American girl who does not know to speak in Hindi, has seen every single Hindi movie that mattered from the first silent era till today. So you start an excitement in a person कि ये भी देखने लायक है ये फिल्म. And where जो आप मीडियम बोल रहे हैं ना, जहाँ पे दिखाएंगे, कहाँ पे दिखाएंगे? या तो सिनेमा में दिखाएंगे, लेकिन सिनेमा में हमारे पास इतने सारे स्क्रीन्स है, लेकिन वो भी स्क्रीन्स कम पड़ रहे हैं. So let's keep that aside. दूसरी कहाँ जगह डीवीडीज पे हम लोग बेच सकते हैं, लेकिन डीवीडी में लेने वाला कौन है? जब तक हम यहाँ पे थोड़ा इन द हाउस, इन द फेस दिखा दे, फिर इवन दैट कैन कंटिन्यू. ये भी बहुत बड़ी बात है, आई फील. एंड मोर चैनल शुड पिक इट अप. एवरी चैनल शुड हैव अ क्लासिक चैनल. In Hollywood, all great studios have their classic channel. It's their treasure, boss. It is their treasure, and they are proud of it. So I don't know with other mediums, where do we show movies? We can have festivals, but this is a great idea. I feel discussions हो सकते हैं. फिर film Bimal Roy Festival on in theaters भी कर सकते हैं. We'll come to that later. The road has just the journey has just started. मीडियम की बात हो रही थी यहाँ पे, तो एक रीमेक जो होता है फिल्म्स का, स्पेसिफिकली 40s और 50s की जो फिल्में हैं, 70s और 80s की हमने देख लिया, रीमेक्स होते हैं, फिल्म लोग देखते भी हैं. Right. लेकिन 40s की और 50s की जो फिल्में होती है, उनका ज़्यादा रीमेक लोगों तक अभी पहुँचा नहीं है. तो डू यू थिंक सच अ मीडियम विल हेल्प द यंग जनरेशंस टू ब्रिंग व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इन अ ट्रेजर? See, I am not so sure about the remake. The remake is another version of the same story. I am more interested first to see the original. If you do not see the original, how can anybody say that the remake was an improvement on the original? First, see the original. And remake is not the answer. You are telling me to put not even old wine in new bottles. You are telling me to bring a new wine in a new bottle, but the label is old. Thus the title is old. मैं बोल रहा हूं रीमेक की बात क्यों कर रहे हैं आप? इज दैट द वे टू टॉक अबाउट बिमल रॉय? यू टॉक अबाउट बिमल रॉय बाय वॉचिंग हिज फिल्म. फिर किसी को रीमेक करनी है वो ठीक है, बट फर्स्ट वी शुड ऑल बी अवेयर ऑफ द क्लासिक्स दैट वी हैव इन आवर ट्रेजरी. इट्स आवर ट्रेजरी, बॉस. तो रीमेक इज नॉट द सोल्यूशन. और ये कोशिश अच्छी है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि 60 और 70 के दशक में जिस तरह से फिल्में आई, और कहा जाता है कि जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है जी. 60 और 70 के दशक में जो फिल्में आई उसमें एक उद्देश्य होता था जी, एक मोटिव होता था जी, कि किसी तरह से एक रास्ता दिखाना समाज को. Right. लेकिन मौजूदा दौर की जो फिल्में हैं, सॉरी मौजूदा दौर की जो फिल्में जी. वर्तमान में जो फिल्में आ रही जी. हैं अभी रिसेंट, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई डकैती सिखा रहा है, Right. कोई आतंकवादी बनाना सिखा रहा है, कोई आशिक बनाना. Is an Atangwadi is part of our society today? Really? It is, no? It is a reflection of our society, unfortunately. And the quality of films that might come out, and some films are great and some films are okay. But aren't those films a reflection of our society? Mediocrity. There's mediocrity in society also. ये मैं बोलने वही जा रहा हूँ. So please, sorry I interrupted you. हाँ जी, so continue. तो कमर्शियल होने, सिनेमा अगर कमर्शियल हुआ है जी, तो उसका मोटिव चेंज हो गया है. आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अपने उद्देश्य से भी भटक गया है? कहीं ना कहीं हम पीछे अगर नजर डालें, आप 60 और 70 के दशक की फिल्में देखें या उससे पहले की फिल्में देखें, उसमें कहीं ना कहीं एक संदेश होता था, समाज के लिए एक संदेश होता था, नई नस्ल के लिए एक संदेश होता था. कहीं ना कहीं उसमें हमको ये सिनेमा का जब पर्दा गिरता था तो ये महसूस करता था कि हम कहीं ना कहीं कोई नई राह मिल जाएगी, इससे कोई नया उद्देश्य मिल जाएगा. लेकिन कमर्शियल जब सिनेमा हुआ, कमर्शियल सिनेमा सब पहले से ही है. कमर्शियल सिनेमा जो अभी मौजूदा सिनेमा है उसकी तो परिभाषा ही बदल गई है. But that is a reflection of aina of our society in any case. We are living in mediocre times. Let's accept it, and we have to do something about it, because it is an aina. But there are some great films being made today. ना आप उनको इग्नोर मत कीजिए. ये जो फिल्म्स देख रहे हैं, उस जमाने में इस फिल्म के साथ साथ बहुत ही mediocre फिल्म्स भी बनती थी. But the great films are always a reflection of your society. अब you are talking about आतंकवादी, but that is also the topic, hot topic of the day. ये भी तो बन रही है. बट ग्रेट फिल्म्स, whatever the subject may be, have to be made, and they are getting made. मतलब 70s में भी बहुत कम फिल्म ऐसी बनी है, अर्ली 90s में बहुत कम फिल्में ऐसी बनी. बट टुडे वी आर सीइंग मेनी मोर डायरेक्टर्स विद डिफरेंट वॉइसेस. वो हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं. एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी. प्लीज
Please make no mistake about that. Shayad there's too much of plenty, there's far too much of luxury in our lives, and the films that are being made today are less about the common man and more about the man that is probably an NRI today. Let's face it. But then half our country is outside of the country in many ways. Today, I think it is very important to talk about our society. You're very right. You're very right. But there are people like Shujit Sarkar, people like Raju Irani talking about society. These are they don't have to be burning topics. It could be about the way we live our lives today, the way the idiom of love today. It could be that also. वो भी हो सकता है. But बन रही है, ऐसी कोई बात नहीं. हम तो ऐसे बोले कि सब बकवास पिक्चर बन रही. नहीं. I think some great movies are being made today. आज के ज़माने में. But ये भी उस ज़माने में there were some nonsense movies were made in the 60s. ऐसा नहीं है कि भैया खाली select करके एक presentation दे रहे हो 5 to 7 great directors, 10-20 directors in the history of cinema. Great directors. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिमल राय के समय में विमल जी के समय में वो क्या था जो इस दौर में आप मिस करते हो कि ये होना चाहिए फिल्म में, ऐसा एक पॉइंट मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि अगर क्या है जो आज नहीं है और होना चाहिए फिल्मों में. क्या है जो आज नहीं है? ग्रेट फिल्म्स नहीं है, क्या बोलना है? नहीं. आई थिंक एक स्ट्रगल जो था फिल्म बनाने के लिए, आज लाइफ हैज बिकम रादर ईजियर. आज हम देखते हैं कि what is the struggle today in cities. आज के हमारे cities में सब struggle ही करते हैं. डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म के लिए बहुत struggle करता है, but मेरे हिसाब से it was far more difficult उस जमाने में, communication wise, finance wise, structure wise. एक सिनेमा इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर इतनी नहीं थी. आज 10-12 साल में स्ट्रक्चर भी बन गई, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया. इट बिकम रादर इजी. उस जमाने में वो जैसे कि मैंने कहा, वो फिल्म उन्होंने बनाई थी, पहली फिल्म, वो स्टॉक के पीसेस कट करके पिक्चर उन्होंने रिलीज की है. सो व्हेन देयर इज अ स्ट्रगल, यू हैव टू वैल्यू दैट स्ट्रगल, एंड व्हेन यू वैल्यू दैट स्ट्रगल, द आउटपुट हैज टू मीन समथिंग मोर देन जस्ट सेइंग मैंने पिक्चर बनाई. इसलिए ग्रेट पिक्चर्स कम आउट ऑफ ग्रेट स्ट्रगल. आप ईरानियन सिनेमा देखिए, देयर वॉइसेस आर चोक्ड. आप देखो, one of the finest directors in the world are coming from Iranian cinema, and the reason why they are coming up with great cinema is because they are struggling to express themselves. That is the problem. And when they are struggling to express themselves, when they get an opportunity, they make it count. आप देखिए ईरानियन फिल्म, आपने सेपरेशन देखिए, बारान देखो, you will see how they are dealing with topics. सिंपल सिनेमा बट वर्ल्ड सिनेमा बन चुकी है. हम लोगों को वर्ल्ड सिनेमा बनानी चाहिए. वर्ल्ड सिनेमा थोड़ी मजा आएगा उसमें. बट दैट्स व्हाट्स मिसिंग टुडे. वी आर मेकिंग गुड सिनेमा, बट वी शुड बी आल्सो मेकिंग वर्ल्ड सिनेमा. ये मेरा टेक है. Thank you, Boman, for addressing these questions. As part of this property, we also have Bimal Das' son Joy's documentary. Now we just throw you open to every table. Table to table? It's not table. नहीं, मैं टेबल टू टेबल जाऊंगा ना, इसमें क्या है? तो एवरीबडी विल कम टू वन टेबल तो पुट कर, आई विल गो हियर, देन आई विल से हेलो कोलकाता, लखनऊ, रायपुर. So thank you. Yeah. So I think we'll take the first table, Raipur, because till then we will all they will join us. Yes. And they can have lunch. Yes. हमें लंच नहीं मिलेगा, मतलब मैं समझ गया. कोई बात नहीं, मैं समझ गया. Sorry. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Thank you for being with us. Thank you very much. Yes. And Boman is here for more interviews. कोई इंग्लिश बोला, कोई हिंदी बोला, कोई बात नहीं. जब मैं छोटा था तो हमारे दूरदर्शन पे हर संडे एक हिंदी फिल्म दिखाई जाती थी, जो एक पुराने ज़माने की फिल्म रहती थी, लेकिन बहुत ही सोशली रेलेवेंट फिल्म्स और ग्रेट फिल्म्स माने जाते थे. उसमें से बिमल रॉय के सब फिल्म्स आते थे, गुरुदत्त साहब के भी आते थे, एंड आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. वो फिल्म्स देख के मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ था, और मेरा बचपन आई थिंक was completely different because of these films. आज हमारे पास 180 चैनल्स दिखाई देते हैं जो हम चेंज करते जाएंगे, लेकिन आपको एक भी क्लासिक फिल्म देखने का मौका नहीं मिलता है. एक चैनल 60s और 70s में लिमिटेड एयर टाइम, 6 से रात को 10 बजे तक का एयर टाइम में एक फिल्म तो दिखाती थी हमें, ग्रेट फिल्म. 180 चैनल 24 आवर्स रनिंग, and we don't get to see one great film. One great film मतलब आज भी ग्रेट फिल्म बनते हैं, लेकिन उस जमाने का ग्रेट फिल्म.
Because these films are like a treasure that we own. This country owns. Every one of us. It is your property. It is our property. Of course, the rights are with somebody else. But we owe it to the younger generation to show them these films, that they exist and they have influenced cinema over the years. ये बहुत ही ज़रूरी है. And I feel Zee Classic has done a great job. हमें पता नहीं कि इसकी सक्सेस रेट क्या होगी या नहीं होगी. It doesn't matter. The idea is good. The idea is noble. And I am very, very grateful to Zee Classic, even for choosing me. Next time around, they should bring a very young actor to present it. और influence होगा. तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? इसमें 2 बीघा ज़मीन में कह चुका हूँ. 2 बीघा ज़मीन में बहुत ही छोटा था और मैंने फिल्म देखी तो मैं एज ए स्मॉल बॉय में हिल गया था परफॉर्मेंस देख के. मेरे फेवरेट एक्टर है उसमें बलराज साहनी. और मैं जब क्रेडिट्स पढ़ रहा था जब मैं छोटा था, मैं क्रेडिट्स हमेशा पढ़ता हूँ. तो उसमें ऋषिकेश मुखर्जी वाज असिस्टेंट एडिटर and he was a very, very well known director of those days. I said, तो assistant हुआ करते हैं, director directly नहीं बने. You know, these things play on your mind, you know. Can you know कि we have to pay our dues to get there, to become great. It doesn't happen overnight. हमारे लिए आप बोलेंगे राजकुमार हिरानी great director है, लेकिन राजकुमार हिरानी 20-25 साल से छोटे छोटे ad films को edit करते थे. Clips को join करके interesting videos बनाते थे. Today he is Rajkumar Hirani. So it influences a child. एक बच्चे को देख के लगता है कि ऐसे ही ओवरनाइट कोई सक्सेस नहीं बनता है. When I read Hrishikesh Mukherjee's name as assistant editor, मैं शॉक हो गया. The great Hrishikesh Mukherjee in the 40s was an assistant editor. तो influence of greatness will always be good. बमन सर, आप कॉमेडी किरदार बहुत करते हैं जी, फिल्मों में. मैंने भी सुना है जी. बिल्कुल, मैंने देखा है. और बेसिकली जैसे आपने अभी रिसेंटली कुछ इशू हुआ था किकू शर्मा के साथ, जी. उन्होंने भी किकू शर्मा के जी. साथ. तो ये इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं, you yourself is a stand-up comedian. I'm not a stand-up No, comedian. you have great comedy roles Right, and everything. right. So what, as an actor, what will be your take on this? So I don't know what I will say will turn controversial. I don't know whether it's a good idea to talk about it right now. But I'll say in one line that no, I'd rather not. I'd rather not talk about it. Kiku knows I love him and I'm happy that he is okay. But keep it to that way. Super. Keep it to that. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.